Nice. Morning everyone, welcome back to another video. You're watching the Wild Grove. So good news this morning, बारिश तो अभी नहीं हो रही है एंड थोड़ा सा ह्यूमिड हो रहा है तो आई डोंट नो, फिंगर्स क्रॉस्ड. अभी हम जा रहे हैं टिल द रिसेप्शन. विल वेट फॉर आवर जिप्सी. हमारा अभी वापस से जोन 6 है एंड शाम में पहले 8 था बट कल हमने 7 देख लिया एंड आर driver and guide said that zone 8 is also similar. So we said that okay, we'll maybe try our luck again in zone 6 or 10. So शाम के लिए मैंने 10 बोला है बट कल हम जब 10 में थे तो काफ़ी कीचड़ होने की वजह से एक कैंटर फंस गया था. तो उधर ऑन द ट्रैक, सफारी ट्रैक मिट्टी होती है तो बारिश के टाइम पे गड्ढे हो जाते हैं. सो हो सकता है कि 10 पे सफारी वो बंद कर दें एंड वी गो टू 6 अगेन इन द इवनिंग. तो ऑफकोर्स जैसे भी होगा मैं दैट टाइम, अगर बारिश नहीं हुई तो मैं वीडियो तो बनाऊंगा ही. सो एज आई ऑलवेज से, नेक्स्ट आई विल सी यू इन द जिप्सी और ऑन द ड्राइव टिल द zone 6 gate. So stay tuned. So, before I start talking about the jungle, I have been told that my voiceovers are quite formal and I should be a bit more conversational. So, this is me trying to be a bit more casual with the way I do my voiceovers and show you around the jungle after I've gone there and when I'm doing my editing. So, here goes. So, as we went inside Zone 6, after a light drizzle, we were welcomed to this extremely muddy track. Now, normally, tigers in particular love walking on the safari track as it is soft and they love to walk on soft tracks that don't prick their paws. But in this situation, sometimes even the cars don't like to go on this track. We explored the zone and made our way to the absolute end of it. This particular area is where Zone 6 meets Zone 1, and here we were just trying to peek over and see if a tiger was lurking below. Anyways, so we moved on from here, trying to look for any animal movement, and as luck would have it, we were about to chance upon some very interesting animal behavior. Well, just not from a big cat. Yes, that is a crocodile. Now you must be wondering, is it that thirsty that it's sitting in the middle of running water with its mouth open? Not quite. What it's trying to do is sit very strategically on downstream water in order to catch fish. Now you see these movements? It's trying to pick off any unfortunate fish that may be flowing downstream all the way to their bitter end. ओके आई नो, वो थोड़ा सा फॉर्मल हो गया था. सो उस क्रोकोडाइल को देखने के बाद वी वेंट अ बिट अहेड एंड सॉ दिस ह्यूज हर्ड ऑफ स्पॉटेड डियर सिटिंग इन दिस ग्रीन पैस्चर. जंगल में गाइड्स आपको हमेशा बताएंगे कि अगर डियर या बंदर या दोनों ज़मीन पे आराम से बैठे हों, मतलब आसपास प्रेडेटर का मूवमेंट ज़्यादा नहीं है, विच वॉज द केस हियर. इसीलिए the rest of the safari we spent just exploring the zone and enjoying the greenery of Ranthambore in the monsoon. And that was all about this safari in Zone 6. And we're back. It was a great safari today. एंड सो आई वाज थिंकिंग कि डिमांड एंड सप्लाई जैसे होती है, नॉर्मल टाइम में जो चीज़ें हमें आज दिखी हैं वो बहुत रेगुलरली दिखती हैं तो उतना वैल्यू नहीं करते. बट अभी कुछ और नहीं दिख रहा था तो यही बहुत वैल्यूबल थी. आई गॉट सम ग्रेट शॉट्स ऑफ पीकॉक्स. वी सॉ वन crocodile also. And all in all, Zone 6 was again very good.
अच्छा लगा, बारिश नहीं हुई ज़्यादा, थोड़ी सी हुई बट दैट इज़ एक्सपेक्टेड ऑफ कोर्स. अभी वी हैव वन लास्ट सफारी टू गो इन द इवनिंग इन जोन 10. We'll try our luck there. Until then, we'll kick back, relax for some time. And I know these videos will be a bit short, not a lot to see, but I'm hoping I'm able to bring you the essence of what the jungle looks like during the monsoon. So thank you so much for tuning in. Thank you so much for watching. So we're all set for our final safari to zone 10, and अच्छी खासी धूप है, so feeling very positive. Let's see what we are able to see, and I'll be sure to share it all with you. On our final safari of this trip to Ranthambore, the sun was out and our hopes were up. Although sun बहुत अच्छा था, humidity भी बहुत ज़्यादा थी. But the hope of sighting a tiger on this trip kept the humidity at bay. Now, this particular spot that you see in front of you, यहाँ पे हमारी पिछली सफारी में एक कैंटर फंस गया था. सारे जिप्सी वालों ने उस कैंटर को बाहर निकालने में हेल्प करी, एंड एग्जैक्टली इधर कैंटर निकलने के बाद उस कैंटर ने हर किसी पे कीचड़ उछाल दी. सो दैट वाज एन इंटरेस्टिंग थिंग टू विटनेस. One of my most favorite subjects to shoot, no matter if it is monsoon, winters, or summers. Peacocks may be plenty in Ranthambore, but they make for amazing subjects, given how varied their colors are and how elegant their movements are. This particular one was sitting perched on a dry branch, and it was an absolutely amazing sight. So here we are at the midway stop. Here we can use the washrooms, etc. So here's our gypsy. So हम घूम रहे हैं, काफ़ी देर हो गई जोन 10 में, बट अच्छी खासी धूप थी, बट ज़्यादा मूवमेंट है नहीं, ना कॉल, और बारिश हुई है तो मतलब पगमार्क्स भी कुछ खास है नहीं कहीं पे. तो अभी थोड़ा सा टाइम है हमारे पास. लेट्स सी कुछ मिलता है आफ्टर द सन गोज डाउन, सम मूवमेंट हैपन्स. ऑलवेज रिमेन होपफुल इनसाइड द जंगल. कुछ इक्का दुक्का बर्ड्स इधर उधर दिखे हैं. डियर नॉर्मल नाउ even in the monsoons. So yeah, if anything else interesting comes by, you'll know, because I'll show you. These are flameback woodpeckers. They are plenty in Ranthambore. Interestingly, their tongues are twice the length of their beaks, and when they are not using their tongues are wrapped around behind their head and helps them to avoid any brain damage when they are away pecking at the wood. Such a beautiful sunset. Oh well, no tiger sightings in this safari as well, but not every trip will have bumper sightings. I was going back home from this trip of Ranthambore in the monsoon with an extreme sense of pleasure and satisfaction. Pleasure of having seen such scintillating views, and satisfaction कि रणथंबोर में हरियाली भी होती है यार. Yes, some dry trips are necessary so that when you do see the tiger, it's all the more special. So with that, our last safari also came to an end. Hi everyone. So I'm back home. Reached some time back, but I realized कल की सफारी के एंड में मैंने कुछ sign off नहीं किया.
एक्चुअली हुआ ये था, हमारी सफारी व्हीकल बाहर निकली एंड एक मार्केट प्लेस आता है रणथंभौर में 6 to 10 जोन के साइड पे, वहाँ पे वो ख़राब हो गई. सो वी गॉट स्टक फॉर सम टाइम. एक और गाड़ी आई तो हम काफ़ी थक गए थे. वापस जब आए, आई टोटली फॉरगॉट वीडियो बनाने के लिए, एंड रिटर्न जर्नी इज़ मोस्टली सिमिलर, सो आई डिडंट शूट एनी ऑफ दैट. But luckily the weather is quite good back home also. It's a great blue sky. And yes, so my next trip is not going to be for some time, a few months. So let's hope I edit all of the content that I have in time and I'm able to put it up. So thank you so much for tuning in for this trip, and I'll see you in the next one soon. Ciao.